गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स की एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5 रेशो 9 रेशो 13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सो सॉल्यूशन, let the angles of a quadrilateral be 3x, 5x, 9x and 13x respectively. Why the angle sum property of a quadrilateral 3x plus 5x plus 9x plus 13x is equal to 360 degree. So 30x is equal to 360 degree. So x is equal to 360 over 30 is equal to 12 degree. So therefore first angle is equal to 3x is equal to 3 into 12 degree is equal to 36 degree. Second angle is equal to 5x is equal to 5 into 12 degree is equal to 60 degree. Third angle is equal to 9x is equal to 9 into 12 degree is equal to 108 degree. Fourth angle is equal to 13x is equal to 13 multiply 12 degree is equal to 156 degree. Question number second, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So let ABCD be a parallelogram. In triangle ABC and triangle DCB, AB is equal to DC. Opposite sides of a parallelogram are equal. BC is equal to CB, कॉमन है. AC is equal to DB, ये हमें गिवन है. So therefore triangle ABC is congruent to triangle DCB by SSS congruence rule. So angle ABC is equal to angle DCB by CPCT. Now angle ABC plus angle DCB is equal to 180 degree, क्योंकि sum of interior angles on the same side of transversal is 180 degree. एंगल ABC प्लस एंगल ABC, क्योंकि एंगल DCB जो है किसके इक्वल है, एंगल ABC के. सो देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. टू एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री ओवर 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम and one of its interior angle is 90 degree, so ABCD is a rectangle. Question number third, show that if the diagonals of a quadrilateral bisect each other at right angle, then it is a rhombus. So solution, let ABCD be a quadrilateral where AC and BD bisect each other at right angles at point O. In triangle AOD and triangle COD, AO is equal to CO as AC is bisected by BD at point O. Angle AOD is equal to angle COD, each 90 degree. OD is equal to OD, common है. Therefore triangle AOD is congruent to triangle COD by SAS congruence rule. So AD is equal to CD by CPCT. Similarly, AD is equal to AB and CD is equal to CB. So AD is equal to CD is equal to AB is equal to CB. So therefore ABCD is a rhombus. Question number 4, show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle. Solution, let ABCD be a square. Since a square is a parallelogram and diagonals of a parallelogram bisect each other, therefore diagonals of a square bisect each other. In triangle ADB and triangle BCA, AD is equal to BC, क्योंकि sides of a square are equal. Angle A DB, angle BAD
इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी ईच 90 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू बी ए कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी is congruent to triangle BCA by SAS congruence rule. So BD is equal to AC by CPCT. BD is equal to AC means डायगोनल जो है वो हमने इक्वल जो है वो प्रूव कर दिए हैं. इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, OB is equal to OD क्योंकि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. ए बी इज इक्वल टू ए डी क्योंकि साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल. ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन है, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ डी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल. So angle AOB is equal to angle AOD by CPCT, but angle AOB plus angle AOD is equal to 180 डिग्री लीनियर पेयर से. एंगल AOB प्लस एंगल AOB क्योंकि एंगल AOD जो है वो एंगल AOB के इक्वल है, सो एंगल AOB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री. So 2 angle AOB is equal to 180 degree. So angle AOB is equal to 180 over 2 is equal to 90 degree. It means AO is perpendicular to BD. That implies AC is perpendicular to BD. Hence AC is equal to BD and bisect each other at right angle. Question number 5. Show that if the diagonals of a quadrilateral are equal and bisect each other at right angle, then it is a square. So solution, let ABCD be a quadrilateral where AC is equal to BD and AC and BD bisect each other at a right angle. In triangle DOA and triangle DOC, DO is equal to DO common, angle DOA is equal to angle DOC each 90 degree. OA is equal to OC as AC and BD bisect each other. Therefore, triangle DOA is congruent to triangle DOC by SAS congruence rule. So, DA is equal to DC by CPCT. Similarly, BA is equal to BC, BA is equal to DA and BC is equal to DC. और DA इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू BC. तो चारों साइड जो इक्वल हो चुके हैं. सो ABCD इज ए रोम्बस. इन ट्रायंगल DAB एंड ट्रायंगल CBA, DA इज इक्वल टू CB, ऑपोजिट साइड्स ऑफ रोम्बस. AB इज इक्वल टू BA कॉमन, BD इज इक्वल टू AC गिवन है. Therefore, triangle DAB is congruent to triangle CBA by SSS congruence rule. So, angle DAB is equal to angle CBA by CPCT, but angle DAB plus angle CBA is equal to 180 degree. Sum of interior angles on the same side of the transversal is 180 degree. एंगल DAB प्लस एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री क्योंकि एंगल CBA जो है वो एंगल DAB के इक्वल है. सो 2 एंगल DAB इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल DAB इज इक्वल टू 180 over 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो ABCD इज ए रोम्बस. ABCD is a rhombus with one angle 90 degree. So hence ABCD is a square. Thank you.